बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सिविल साइटेटर में खुशामदीद। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एडमिशन के रेलिवेंट प्रोविज़न है जी ऑर्डर 12 ऑफ सीपीसी। एडमिशन को डील करते हैं। उसके अलावा अगर आप क्रॉस रेफरेंस में लिखें तो QSO का आप आर्टिकल 30 से 37 तक लिख सकते हैं, 36 तक स्कोप इन ऑर्डर टू इन्वोक द प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 12 Rule 6 CPC, it was absolutely necessary that the admission relied upon be clear, unambiguous, unqualified, and unequivocal, and further that the purported admission had to be read as a whole. One could not be allowed to rely on a part of the admission, ignoring the rest. 2020 SCMR 171 2019 CLC 1475। इन शॉर्ट के जैसे कन्फेशन होता है ना कि वो बगैर किसी ड्यूरेस के, बगैर किसी इन्फ्लुएंस के या बगैर किसी फेयर के और कंप्लीट एज अ होल होना चाहिए, तो इसी तरह एडमिशन भी कंप्लीट एज अ होल होना चाहिए। Judgment on the basis of admission. Court was empowered under Order 12 Rule 6 CPC to pass a judgment on the basis of admission of facts made by the parties to their pleadings at any stage of the proceedings. 2007 SCMR 433। Provisions of Order 12 Rule 6 CPC provide summary and speedy remedy in cases where admission was made by defendant in pleadings or outside the same। 1996 SCMR 696। Pleadings, though do not themselves have evidentiary value unless the plaintiff and or defendant, as the case may be, enter the witness box and lead the evidence in support or defense of their pleadings. But an exception to such rule is that pleadings or a written statement can be considered when there is an admission on the part of the defendant, because depending upon the facts of each case, even on the basis of written statement, as a judgment as envisaged under Rule 6 of Order 12 of CPC can be pronounced। मतलब एडमिशन के बेसिस पर भी जजमेंट प्रोनाउंस हो सकती है। 2019 YLR 2609 कराची। Facts neither specifically pleaded nor denied. Fact neither specifically pleaded in plaint nor denied by the defendant in his written statement. Such non-denial could not be legally constructed to be an admission। PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट 211। अब ये भी हमारे यहाँ नॉर्मली प्रैक्टिस चल रही होती है कि अगर वो किसी फैक्ट को डिफेंडेंट ने डिनाई नहीं किया और प्लेंटिफ ने क्लेम किया तो उसको प्रिज्यूम किया जाता है कि वो एडमिटेड फैक्ट है। लेकिन यहाँ पर इस जजमेंट में कहा जा रहा है कि ये लीगली जो है वो एडमिटेड नहीं होगा। अगर उसने डिनाई नहीं किया तो इट डजंट मीन कि उसने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक हो गया। अच्छा जी, decree on conceding written statement in a case of minor defendant. Suit filed against minor was decreed in favor of plaintiff on the basis of conceding statement made by his maternal uncle, who was appointed guardian ad item minor assailed the decree in a suit alleging fraud. Trial court decreed suit in favor of minor, while appellate court dismissed the suit. Decision of appellate court was upheld by High Court and Supreme Court on the ground that suit against minor was not decreed on the basis of any compromise, but in view of conceding written statement filed by a guardian and ad litem under Order 12 Rule 6 CPC. Interest of minor being involved, it was all the more necessary for the court to have been cautious to grant decree on conceding written statement filed by his guardian ad litem, who was none else than his real maternal uncle. Lower appellate court had taken note of situation very carefully। 2007 SCMR 1684। Court can require any admitted fact to be proved otherwise than admission। Proviso to Order 8 Rule 5 CPC confers upon the court discretion to require any fact admitted in the written statement to be proved otherwise than by such admission। 1988 SCMR 322। मतलब रिटन स्टेटमेंट में अगर डिफेंडेंट ने कोई वर्जन को एडमिट कर लिया है तो फिर वो क्या होगा, उसकी बेस पर वो एडमिटेड फैक्ट को जो QSO कहता है 113 एडमिटेड फैक्ट नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, ये वही वाली बात है। अच्छा जी, एडमिशन ख़त्म हो गया। आगे हम पढ़ेंगे एडवोकेट को। एडवोकेट क्या होता है, एडवोकेट के बारे में सारी डिटेल नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।